Hello everyone. So do let me know if you are. Let me check. I just have to share that live and listen my voice. Is it? Am I audible or not? Please let me know in the comment section. Am I audible or not? Yes, yeah, we are audible. So we have to wait for a few moments and then we have to start. Okay, so it's the second session for Stipendium Hungaricum Scholarship 2024-5. In last session, we were discussing in detail about the Stipendium Hungaricum Scholarship in the few important points: number of seats, motivation later, key points in nomination. In today's session, we are discussing in depth information that would be useful for almost all the audience who are watching us from Pakistan, India, Bangladesh, in any other country. It will be more specific and informative session. So, apart from this, if you have any more queries or question later on, you can find me on Instagram. You can find MSKmentors on Instagram, and you can approach our team for any kind of question inquiries. Apart from this, today we are live on MSK Mentors as well as Opportunity Corner. Opportunity Corner is a platform which provide you different informative posts regarding internships, different kind of fellowship and study abroad opportunities. So stay in touch with that platform too. Let me start from the basic introduction of Stipendium Hungaricum scholarship. But before that, if you are new to my face, maybe since long I'm doing mentorship in services across Europe, I'm Mohammed Shoaib. Currently working as a business development manager and executive board director in Hungary. Apart from this, I'm a graduate and alumni of Stipendium Hungaricum scholarship. Since I think 4 years, I'm working as a mentor and Erasmus trainer across Europe, where I'm delivering training relative to study abroad, relative to career opportunities, and most important, my domain is public speaking and presentation skills. So my main aim of today's session is to mentor you, to guide you how to apply for that, but most importantly, what are the main key parameters that you have to consider while applying for that. So most of our audience are from Pakistan, in India, in Bangladesh. So our conversation will be mixed, like Urdu, Hindi, and English. So if you're watching me from any area, it doesn't matter. Just go through the entire session. At the end of the session, I'm assuring you, you will have an ample information about that. So when you heard about Stipendium Hungaricum scholarship for the first time, so there's a lot of queries and question that comes to your mind, but it's a fully funded scholarship that is offered by Tempus Foundation. And the sending partner, or let's suppose if you are from India, the sending partner are UGC. If you are from Pakistan, the sending partner are HEC. If you're from any other country, the sending partner are your higher education authority in your country. The second important point, is it a fully funded scholarship or not? Of course, it's a fully funded scholarship that covers your tuition fees, living expenses, accommodation, and stipend health insurance. So it's a fully funded scholarship. Uh, Usually, I observe that it's one of the best opportunity for bachelor student. क्योंकि it's very rare कि bachelor students के लिए any scholarship is offering such a huge number of scholarships. So if you talk about Pakistan, so for Pakistani students, they are offering around uh, 200 seats last year, and this year it increased up to 400. So within that 400, in last year when it was
200 नंबर ऑफ सीट्स, तो उसमें 125 बैचलर के थे, 50 मास्टर के, 25 पीएचडी के थे। तो इस बार कह रहे हैं कि सीट जो है वो डबल हो चुके हैं। तो अगर वो डबल हो चुके हैं तो इट गोज टू दी around 400. So if we multiply the same number, so around 200 plus seats are for bachelor students. कोई भी scholarship इतनी seats offer नहीं कर रहा। And the plus and important point is MBBS और BDS के जो seats है, both are available for Pakistani and Indian students. If I talk about the number of seats for Indian students, so last year it was around 200s, and this year will be the same number. So within that 200 number of seats, there are almost 15 to 20, because they don't specify the number of MBBS students, but mostly they just mention that there is a number of seats जो कि for Indian students जो है वो 15 से 20 के बीच में है, और for पाकिस्तानी लास्ट ईयर 15 से 20 के बीच में थे। तो इस साल वो डबल हो चुके हैं, तो डेफिनेटली गोज टूवर्ड 30-25। तो ये नंबर जो है फ्लक्चुएट करता है, तो कोई भी स्पेसिफिक नंबर आप बता नहीं सकते। तो हम बात कर रहे थे अगेन स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप की। तो मैंने आपको बताया ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। अभी जो उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, मैं सेशन को गो थ्रू कर रहा हूँ। सो इफ यू आर वाचिंग मी लेटर ऑन, इफ यू आर वाचिंग मी ऑन एनी प्लेटफॉर्म, जस्ट शेयर दैट वीडियो, सो मोस्ट ऑफ आवर पीपल who was waiting for that session can join us. Just let me share it on my own platform too. So apart from this, there are few important parameters that you have to consider it when you are applying for that scholarship. So let's suppose, let me first talk about the basic requirements and apply procedure for Indian student. Then I'll talk about for Pakistani and other countries too. So the basic procedure is every country has their own criteria of apply procedure. So let's suppose if you are from India, you have to send your complete documents, including your motivation letter, your previous documents, extracurriculum activities, and there are some key other elements that you have to compile your file. And once UGC announce that scholarship, then you have to send to the UGC specific address. From the last 2-3 years, UGC usually announce the scholarship on the very end, and at that time students are not having that much time. So I would recommend you, if you are watching me from India, try to prepare your documents, and if you need any kind of help or support, you can always approach MSKmentors on Instagram. Our team will be happy to help you in details. So you have to complete your document. After once your documents are completed, that you have to send your document to the UGC. Then UGC will nominate number of students, but along with that you have to apply on Tempus Foundation as well. So if I'm summarizing the conversation for Indian student, you have to complete your documents, plus you have to apply on Tempus Foundation portal. You have to download that form, fill that form what is usually published by UGC, then complete all the relevant documents and send it to the address mentioned by UGC. That's the application procedure for Indian students. Let me talk about the basic requirements and application procedure for Pakistani students. So for Pakistani students, the application procedure is, first you have to make your profile on HEC portal, then you have to apply on HEC portal, then you also have to apply on टेम्पस पोर्टल। तो पाकिस्तानियों के लिए है कि आपने पहले जो है वो HEC पोर्टल पे अपना प्रोफाइल बनाना है। प्रोफाइल बनाने में कुछ चीज़ों का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, ख़ासकर आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं और आप लोगों की जो प्रोफाइल है, और इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी PhD प्रोग्राम, तो जो रिसर्च प्रपोजल है दैट आर द की एलिमेंट। और मैं आपको एक पॉइंट बताऊं फॉर PhD स्टूडेंट, बिकॉज लास्ट सेशन में व्हेन दे आर अप्रोचिंग अस इन इवन आवर ऑफिस, दे वर आस्किंग अ लॉट अबाउट फॉर PhD स्टूडेंट्स। इफ यू आर वाचिंग मी, यू आर अप्लाइंग फॉर PhD, तो PhD के लिए आपको ये बात याद रखना है कि यू नीड टू हैव एन एक्सेप्टेंस लेटर इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दैट स्कॉलरशिप। इफ़ यू डोंट हैव एक्सेप्टेंस लेटर, आप लेटर ऑन भी जो है वो अपलोड कर सकते हैं, बट हर साल उनका एक टाइम फ्रेम होता है। तो अब आप लोगों ने प्रोफेसर को कैसे अप्रोच करना है, उस पर एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपको MSKmentors के इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। और अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करते हो हाउ टू सर्च
सुपरवाइज़र फॉर स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप, तो आपको मेरी शोएब स्पीक्स की यूट्यूब पे भी वो वीडियो मिल जाएगी। तो आप उधर जाइएगा, उधर जो मैंने मेथड बताया है उसको आप फॉलो करें। बट इन शॉर्ट मैं इस सेशन में बताऊं तो उसमें ये है कि आप लोगों ने सुपरवाइज़र को ढूंढना है कि वो किस डोमेन पे काम कर रहे हैं, और उसी डोमेन के सुपरवाइज़र को आप लोगों ने ईमेल सेंड करना है, और ईमेल के बाद जो है वो आप लोग जो है वो आपको रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ, हम आपको जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, और एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है? तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने कंसिडर करने हैं व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर दैट स्कॉलरशिप। ठीक है? तो अभी जो है वो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स से अगर मैं बात करूँ तो अगर आप लोग जो है वो इंटरमीडिएट कर चुके हैं तो आप लोग बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग बैचलर कर चुके हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर मास्टर, और अगर आप लोग मास्टर कर चुके हैं यू कैन अप्लाई फॉर पीएचडी। ठीक है? तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आप लोगों ने लास्ट सेशन में मैंने बताया था, और इस सेशन में दोबारा जो है मैं रिपीट कर रहा हूँ। अभी हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं, क्योंकि ये सेशन को मैं इसी वजह से डिफरेंट चंक्स में कर रहा हूँ, बिकॉज लेटर ऑन अ लॉट ऑफ people will watch that session on the different platforms, so you have the different section of today's session, so you can draft it according to your need and you can watch that specific part. So number of seats for Indian students are around 200 number of seats, जिसमें MBBS BDS and including other majors. And if you're asking me that question, that what are the most important subjects, or what are the usually mentioned subjects are available in that scholarship, so almost all the universities which are under the Stipendium Hungaricum scholarship in all the field are available, until and unless your country is not having any proper restriction on specific field, the same like Pakistanis are having on engineering field. So as far as till now information, almost all field are available for Indian student, but the seats are limited in few subjects. Like let's suppose if it comes to MBBS in BDS, and the second important point is for pilot in few other courses. And that's why the selection of university and subjects are really important and crucial part when it comes to Stipendium Hungaricum scholarship. And that's our specialty. That's why we are doing such kind of session. That's why I'm specifically अपना टाइम निकाल के मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ टू talk about it publicly to help a massive number of students. And that's the अगर आप लोग जाएं देखें almost from the last couple of years, तो आपको most of the time जो students बाहर मिलेंगे ये हंगरी में, तो वो directly and indirectly they are getting benefit alhamdulillah from MSK Mentors platform. And that's the team spirit, that's our team mission to help the students in a best possible way, इन डिफरेंट वे, जिसमें जो है वो लाइव सेशंस हैं, जिसमें जो है वो डिफरेंट वीडियोस है, जिसमें वो सारे इंफॉर्मेटिव पोस्ट है, और इसके अलावा फेसबुक ग्रुप्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल गाइड आपको मिल जाएगी। अब हम बात करें कि नंबर ऑफ सीट्स फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, तो लास्ट ईयर द नंबर ऑफ सीट्स जो थे वो अराउंड 200 थे। मैं अराउंड की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर नॉट हैविंग द प्रॉपर क्राइटेरिया, they applied but they don't have the complete documentation, they applied but they don't appear in interview properly, they applied but उनका interview clear नहीं होता, they applied but they don't have the right information in mentorship, and that's the reason कि जो number of seats है वो तो 200 है, but year to year ये depend करता है, और बाज़ों का जो है वो उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉमिनेट हो जाते हैं, लेकिन एंड में जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, या इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि राउंड 200 है। लास्ट ईयर भी ये कह रहे थे, और इस बार भी दोबारा जो है वो सीट्स डबल की गई हैं, बट डिपेंड करता है कि कितने क्वालिटी स्टूडेंट्स इस बार होंगे कि वो अप्लाई करे। तो इफ़ आई समराइज दैट कन्वर्सेशन, तो आई वुड से इट्स अराउंड 400 number of seats for Pakistani students, a huge opportunity, especially for bachelor students, क्योंकि for bachelor student for the आई थिंक इट्स द मैं अक्सर यही कहता हूँ डिफरेंट सेमिनार्स में, डिफरेंट ट्रेनिंग्स में, कि इट्स अ ब्लेसिंग स्पेशली फॉर पाकिस्तानी, इंडियन और एनी अदर कंट्री स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली फॉर बैचलर, बिकॉज द फॉर बैचलर द scholarship opportunities are very limited, they don't have that much opportunities,
especially when it comes to study abroad, when it comes to fully funded scholarship, because most of the time countries and universities are offering opportunities for master student, they are offering for PhD student, because scholarship is not something कि वो उन लोगों को दे जो डिजर्विंग है. इट्स अ काइंड ऑफ हर एक कंट्री जो स्कॉलरशिप ऑफर करता है उनके पीछे उसका बैकग्राउंड होता है कि वो क्यों ऑफर कर रहा है. Sometimes they are offering that scholarship in order to strengthen their research skills. Sometimes they're offering scholarship because they need specific people in the research area. So इसी वजह से ही वो scholarship offer करते हैं. तो बैचलर के लिए इस फॉर इसके जो क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो इसी वजह से वो लिमिटेड होते हैं. तो इसी वजह से आप लोग जो है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें. और आप जो है जितने भी आप लोग के कमेंट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एट द एंड आई विल गो थ्रू ऑलमोस्ट ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस जो आप लोग के माइंड में. तो इट वुड बी बेटर कि आप लोग इस लाइव को शेयर भी करें अगर आप लोग देख रहे हैं. इन अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तो आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू. तो दीज आर द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम डिस्कस कर रहे थे अभी. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ टुडे सेशन. आई थिंक इफ यू आर वाचिंग मी specifically at that time, I'm giving few hints in information that I usually give. But if you miss that point later on, you can go through the entire session in order to note down these points जो अभी मैं बता रहा हूँ. Specifically, I'll talk about first for Indian students, then I'll talk about Pakistani students, because last session we were talking in detail about Pakistani student, but then we received a lot of queries and questions and requests from Indian students too. So for Indian student, the motivation letter is really important. Field selection and university selection is really important. Specific part in key point an Indian student nomination is extracurriculum activities, motivation later, university and field selection. These are the four important points. If you want to win that scholarship, try to focus on these. And if you need any kind of support or help, you can always approach or watch MSKmentors videos. Our team will be happy to help you in that. The second important point for Pakistani student is let me just hide this. The second important point for Pakistani student is इच्छी सी के अप्लाई करते वक्त यू हैव टू नोट डाउन फ्यू पॉइंट जो कि आपने एक्स्ट्रा कुरिकुलम एक्टिविटीज़, रिसर्च स्किल्स, प्रीवियस पब्लिकेशंस इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर पीएचडी, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर, आपकी जो एक्स्ट्रा कुरिकुलम एक्टिविटीज़ है या आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया है विच हेल्प यू जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें. और इसके अलावा भी ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको लगता है कि उनके इसी बिहाफ पे AEF स्कोर कैलकुलेट होता है, यही AEF स्कोर जो है वो स्टैंड आउट करता है एक बच्चे को दूसरे बच्चे से. सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट. Second important point for Pakistani students is hate test in USAT test, जिसके लिए हम लोग भी जो है वो proper session arrange करते हैं. And if it's possible, I can even do one session on that in coming weeks. तो please stay in touch. और इसके अलावा जो है वो मैंने बात की कि द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा कुरिकुलम एक्टिविटीज़, कोई भी यूडेमी या कोई भी कोर्स आप लोगों ने किया हो वो. और उसी के साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन और फील्ड सिलेक्शन. दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट पॉइंट व्हेन इट कम्स टू स्टडी अब्रॉड, व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, क्योंकि यू हैव टू नो कि किस फील्ड का स्कोप चल रहा है आजकल इंडस्ट्री में, किस फील्ड का जो है वो इफ़ यू आर. बट अलॉन्ग विद दैट आपने ये भी देखना होता है कि इस जो फील्ड है या जिस यूनिवर्सिटी को मैं चूज़ कर रहा हूँ, आई एम अ बिट टायर्ड टुडे बिकॉज सिंस मॉर्निंग आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ सेशंस इन ट्रेनिंग एंड दैट्स व्हाई यू विल फील दैट, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. तो इसी वजह से इफ़ यू आर वाचिंग मी फ्रॉम पाकिस्तान, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट: यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, field selection, motivation later, extracurriculum activities, and the few important points that I mentioned. Try to note down these points, try to work on that, and it will help you a lot. So, almost if I summarize the conversation for Indian student first, for Indian student, the important point is apply procedure. You have to apply on Tempest Foundation, then extracurriculum activities, motivation later, field and university selection. For Pakistani students, US 18 hate test along with the points I discussed. Now it comes to motivation later.
It's also very important and critical part in any scholarship. When I'm giving any kind of seminar, in-person trainings, one-to-one mentorship, or anything, I mostly give preference to that point, which is effective motivation later. Sometime it replaced with the later of motivation, sometime it replaced with later of intent, sometime it replaced with statement of purpose. But in today we are talking about Stipendium Hungaricum scholarship, so it's motivation later. When it comes to motivation later, it means कि आपने अपने बारे में बताना है, because you're not here in front of me. If you want to give me a surety, give me information about your qualities, give me information your achievement, and want to show me why I should choose you, why you are a right fit for that scholarship, why you are a right fit candidate for that. For that you have to draft a motivation letter. That's simple. आपने इन एब्सेंस ऑफ योर फिजिकल प्रेजेंस, आपने लफ्ज़ों के शक्ल में ये बता देना है कि वाई यू आर अ राइट कैंडिडेट फॉर दैट स्कॉलरशिप। दैट्स इट। ये बहुत सिंपल सा है। अभी हर एक स्कॉलरशिप के कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एंड दे मेंशन दोज रिक्वायरमेंट्स ऑन देयर वेबसाइट. You have to go through those requirements, and then you have to draft your motivation later according to that. When it comes to Stipendium Hungaricum scholarship, they have four basic requirements. And if I'm summarizing my conversation quite easily, it would be कि आपका जो पहला passage होगा, it would be your introduction. बट इंट्रोडक्शन ये नहीं है कि माई नेम इज दैट इन आई एम विलिंग टू अप्लाई, नहीं. लेट्स सपोज इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी नर्सिंग फील्ड, if you are applying for any MBBS field, the introduction should be in a very precise way to show your motivation and desire in a first few line for that specific program that you are applying. That's the first passage. It would be your introduction. The second passage would be about your previous education, previous qualification, plus you have done some achievements, you have done some research work, you have done some volunteer activities, because most of the time when students are applying for bachelors, when students are applying for master, they don't have that much research capability, they don't have that much extra curriculum activity. So in that specific criteria, doesn't matter if you don't have a lot of things, try to frame those information what you have in a right way. आप उसके लिए जो है वो यू कैन वॉच माय डिटेल वीडियोस ऑन दैट, यू कैन जस्ट गो थ्रू MSK mentors, you can just go through this opportunities karna, I think they also have, and you can even go through the Pakistani students in Hungary group, where I usually share a lot of information about that. So the second passage is quite important. For that second passage is the key element of your application. Try to note down these points, because it's quite rare that someone is having that much information. People will give you ample of information that yeah, apply here, apply there, but these are the key elements. Even if you are, once you are nominated from your host country, still this motivation letter play really a vital role in your final nomination. And sometimes it happened, the student are nominated, usually they got rejected at the end of that, and they mentioned that because of the quota system. But one important parameter is also having that they don't have that much information what is usually required by the university. So the first passage would be your introduction, the second passage would be your previous achievements and qualifications what you have to link that information with the degree that you are applying. If I would say about the first thing, let's suppose I'm applying for, let's suppose, master in business administration, or if I'm applying, let's postmaster in petroleum engineering. So I have done my intermediate in bachelor in petroleum engineering. I have done my, let's suppose, internship in mole. I have done internship somewhere else, and I have also done some research work. So in my introduction, I have to talk about few lines about the program that I'm applying, and then I'll talk about, let's suppose, I'm applying for this, and the second passage would be started from my previous degree that I have done, let's suppose, bachelor with that specific achievements, plus with that internships. And along with that, I have done these few extra curriculum activities. Try to
prioritize those activities which are most important, which is mostly link with your current degree that you are applying, and then try to summarize it properly. And then second passage would be like that: let's suppose I have done research in that, I have done internship in that, I have extracurricular activities in these are the activities which make me a right fit candidate for that. So the second passage would be why you are a right fit for that program. That's the important point for second passage. Third passage would be, let's suppose if they nominate you, how you will use that opportunity to enhance your skills to the next level, how you have to use that. Let's suppose if I give you admission, let's suppose in master in petroleum engineering or any university, how you have to use that opportunity in order to scale your capabilities, in order to scale your research skills, in order to scale your levels, in order to scale your capabilities to the next level, how you have to use it. In that passage is the expressive way to show that now you are in position कि आपको जो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, how you have to scale it to the next level. मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ. It अगर इसके बाद भी किसी को समझ नहीं आ रहा, it's quite hard to understand that. That's why I'll talk about our specific MSK mentors contribution till now in that specific scholarship in study abroad services, and why we are doing that, because a lot of time it happens that people, especially from Peshawar region, especially from Balakot, in these regions, they contacted me, they are nominated, and they got rejected on a very last stage because they don't have the proper mentorship, they don't have the proper guidance. Even in every year we are having such kind of interactive session. That's my second session, that's my second hour that I'm delivering the same presentation with more precise way in order to help you in a best possible way. So the second passage would be that. The third passage would be how you have to use that. And the third is a key element जो मैं आप लोगों को बताऊं कि let's suppose you have done that research work, how you have mastered your those skills, and how you have to utilize those skills once you completed your degree and come back to your country. That's the important point. Try to make notes of these points. The third important point is, let's suppose if you are from Pakistan, if you're from India, and you are going to do research work in data science, you are going to do research in medical field, or you are doing to do research or any other major, or आपने देखा कि in Pakistan, in India, we're having lack in that specific area, either it's research work, either it's practical work, or anything. So you have to try to note down those problematic area, try to note down those important points, and then you have to mention in your letter that yes, we are having problem in that, and after having master degree and that specific subjects and having done research in that area, I will be capable to solve that. और आपका जो फ्यूचर प्लान है उसमें एक्सप्रेस होना चाहिए, कि उसे पता लगे कि yes, you have information for the degree where you are applying, yes, you are having an information about your future goals. और जो last passage होगा, it would be the summarize form of your entire 3 passage form, जो कि आपने जो चीज पहले लिखी है, यू हैव टू समराइज. तो दैट्स इट. अगर मैं कहूँ समराइज करूँ मोटिवेशन लेटर को, 4 पैसेज होने चाहिए, 4000 करेक्टर होने चाहिए. ठीक है. मोटिवेशन लेटर, इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, द लिमिट वर्ड लिमिट्स HEC पोर्टल का थोड़ा सा कम है, तो उसी के लिए आपने थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट करना पड़ता है. ठीक है. और इफ़ यू टॉक अबाउट टेम्पस पोर्टल, तो टेम्पस पोर्टल के लिए आपको जो है वो 4000 जो करेक्टर है उनसे काम जो है वो चल जाएगा. तो यही वो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि मोटिवेशन लेटर के एस्पेक्ट से थे. इसके अलावा मैं थोड़ा बहुत आपको MSK मेंटोर्स की जो कंट्रीब्यूशन है, लेट मी टॉक अबाउट दैट, because I'm proudly seeing that case, because I'm attached with that MSK Mentors platform since 2019 हमने start किया था. और अल्हम्दुलिल्लाह now MSK Mentors is having around 40 plus full-time employees who are working with MSK Mentors, and they are working under my supervision in Pakistan, India, and Bangladesh, and we are trying our best to give mentorship in a best possible way, because mentorship is very important in our society. Mentorship is very important in our culture, because हमारे even
I'm on a very good, in a multinational company, I'm on a very good position. I can get सैलरी ऑन जो मेरी एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा, बट मेरी ज़ात से क्या बेनिफिट लोगों को होगा, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट एमएसके मेंटोर्स प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करता है। डेफिनेटली उनके जो यही कंट्रीब्यूशंस है, यूट्यूब है, फेसबुक है, वो बिल्कुल फ्री है। कुछ सर्विसेज उनके डेफिनेटली पेड होंगे जिसमें मेंटोर्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, दैट वुड बी समहाउ नॉट फ्री। लेकिन जिस सर्विसेज से अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ अटैच रहते हो, आई एम अश्योरिंग यू, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना इंफॉर्मेशन मिलेगा इस प्लेटफॉर्म से, जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉर्नर है, जिसमें ये प्लेटफॉर्म है, कि आपको किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं होगी। समटाइम्स व्हाट हैपन्स इफ यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट पर्सन and that person is not having expertise in that, हम उसमें mistakes कर पाते हैं। That's why always in your life choose a mentor in your life, even if it's academic mentor, even if it's your uh, life mentor, even if it's something relevant to your online business, because nowadays any skill business you need to have a proper mentorship and guidance, and that's the aim what we are doing and what MSK Mentors is delivering that. So if you want to know more about it, just go through the platform and explore it. Secondly, I would talk about a bit opportunities corner, जिसमें जो है वो, जिस पे आप लोग जो है ये लाइव सेशन देख रहे हैं। मैं बहुत कम कोलैबोरेशन करता हूँ। मैं बहुत रेयरली आई एम डू कोलैबोरेशंस विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, बट इट्स वन ऑफ द प्लेटफॉर्म के मैं कहूँ, it is having a lot of contribution in our society because they are collecting information from different websites, different site, and then they are framing those information on one website, जो कि आप लोग को अपॉर्चुनिटी कार्नर के नाम से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। Credit goes to the same Arshad, I think so, if I'm not pronouncing his name correctly. तो उसको credit जाता है because he is having a lot of contribution in that. Same Rashid, he's having a lot of contribution, and one of the best platform if you're looking for opportunity. So I would strongly recommend, if you're looking for study abroad, stay in touch with that. It's free of cost. Just go through it, try to follow few points when it comes to internships, when it comes to opportunities. Just go through it and apply those points. So these are the a few points, and now we'll come toward the question answer, the most important innovative part of today conversation. So let me go through it. Thank you so much, Salman Like Saab. Love you, sir. Thank you so much. Thank you so much, Salman भाई। हमारे लास्ट ईयर एमएसके मेंटोर्स के प्रीमियम सर्विसेज के स्टूडेंट थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी फैमिली की वजह से वो नहीं आ सके। तो वी रियली मिस यू सलमान भाई। कारी रहमत शिनवारी, अस्सलाम वालेकुम हज़रत कारी साहब, कैसे हैं आप? रहमत भाई जो है वो एक वन ऑफ द फेमस कारी हमारे इलाके में, बहुत फेमस है, और मेरा उस्ताद भी है, मेरा टीचर भी है। तो इंशाल्लाह कि उनके सेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड सुन रहा है, लोग सुन रहे हैं इसको, तो दैट्स वाई मैं इंग्लिश और उर्दू की मिक्स कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और डिफरेंट जगहों से लोग हमें सुनते हैं। तो सलमान भाई, थैंक यू सो मच, अ लॉट ऑफ लव। अच्छा, फिर बात है अजान इमरान सर, शुड वी नीड टू अटेस्ट आवर मैट्रिक मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एचएससी अप्लाई? अगर आप लोग अभी टेस्टेड नहीं है तो आप विदाउट दैट भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर यूएस अच्छे मार्क्स लो तो प्लस पॉइंट है, बिल्कुल प्लस पॉइंट है भाई। I'm not in Pakistan right now, so I can't give. I have 63 from last year. Can you suggest me in a field where I could have a chance to get selected? देखो, अक्सर I'm talking about that questions in a lot of, even on daily basis, more than 20, 25 students are visiting our office, and they are asking the same question, Kate. Either I'm allowed with that marks and even I can get scholarship. So if you are from of course you are from Pakistan, so for Pakistani students the important point is quota system, university and field selection, as well as a motivation later, and then USAT marks. So with the combination of all these factors they select the student. So I'm not sure that how strong your motivation later is, which field in university you are applying,
And these are the important points. So just US80 is not the only thing which gave you the selection criteria. Yeah, sometimes last year HEC gives a lot of importance to US80 marks, but there is equal importance of other stuff what I mentioned and what we are doing it. So it's really important. Another field of international, can you please tell me, is there any other field which have देखो almost I would say depend on your profile what you have done it. Like इसकी जो selection criteria है, I'm not disclosing that, but I would just give you few hint which would help you. Okay, let's suppose if they are having the same numbers. First of all, let's suppose if they are shortlisting the students and two of them are having the same grades. Let's suppose he's having same marks, same field, same university, and she's also having the same. Then they select the student on the behalf of the motivation letter and the university they are choosing. So they are the few important point which play important role in motivation letter, university selection, field selection, extracurriculum activities, and the clear view of your future goals and motivation letter. ठीक है. साइबर सिक्योरिटी के लिए बुदापेस्ट में इल्टे बेस्ट है. इस पे मैं अक्सर बात करता हूँ, और इस पे मैं डिफरेंट सेमिनार्स में भी, अगर आप लोग मुझे सुनते हो अक्रॉस पाकिस्तान व्हेन आई एम डिलीवरिंग अ सेशन, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड इसको आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें, शेयर इट विद योर टीचर लेटर ऑन इफ यू आर वाचिंग दैट सेशन. इवन इन माय यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स वर सेइंग कि CGPA का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. Or especially when it comes to ComSets university, especially when it comes to GIK, especially when it comes to few fast university, वो CGPA में बहुत स्ट्रिक्टनेस करते हैं बच्चों के साथ. और उस स्ट्रिक्टनेस की वजह से बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को विन करने से रह जाते हैं. क्योंकि इधर जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, इधर जिस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए फास्ट, उसके लिए GIK, उसके लिए कायद आज़म, उसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, उसके लिए ब्यूटम स्क्वेटा, SBA की यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटी सेम है. दे आर जस्ट चेकिंग योर फाइनल ग्रेड, जो कि कहते हैं CGPA. If you are willing to apply study abroad, CGPA is the key pillars in your nomination. Along with CGPA, there are other factors: motivation later, research goals, and the scholarship itself, what you are applying. But CGPA is really important. If I'm just giving example of my university from where I have done my bachelor, it's not that much well reportable university. It's not that much high standard university, but I have done my bachelor on fully funded scholarship there. Balochistan University of Information Technology and Management Science, Bhutan's university, but they gave a very solid foundation for the students in terms of CGPA. In almost all of my batchmate and even my juniors, they were having a very strong foundation, around 3 plus, 3.5, 3.7, 3.8, even 3.9, and most of them are now studying on fully funded scholarship. Of course, CGPA is not important when you want to go specifically for the practical work, for the lab work, for the job. But if you want to go for the practical approach, if you want to go for study abroad, if you want to go for scholarship, if it's Erasmus scholarship, it is Stipendium scholarship, it's DAT scholarship, it's any other scholarship, along with research skills, along with your previous publication, extracurriculum activities, motivation later, CGP is also important. But if you already done the bachelor, and if you have done the if you don't have any other option, then you can cover that gap. It's not the end of the world. There is opportunity, of course, but you have to cover that low GPA with different other things. You have to done some online courses on Coursera, Udemy, another platform. You have to do some research publications. You have to take part in different research opportunities. You have to take part in different other online courses and seminars, and then it would help you to enhance your skills and uplift your profile to that who already have a very good GPA. Because if you are applying for any scholarship, you are competing with 3.9
mean 3.7, 3.8, that how you have to differentiate your profile with your previous research skills. Previous important point is motivation later. And every as I mentioned, that every scholarship has a different criteria, every scholarship has a different platform on which you have to go through it, read about it, and then you have to draft your motivation later. So if I'm summarizing that point, of course CGPA plays really a vital role in your nomination and scholarship. ठीक है जी भाईजान। मैं जो है बिल्कुल आप लोग को रिप्लाई देता हूँ। मैं रिप्लाई में बहुत अच्छा हूँ, लाइव सेशन में तो बहुत अच्छा हूँ, लेटर ऑन फिर मेरी टीम वाले करते हैं, मैं नहीं करता। ठीक है। अच्छा भाईजान, आदिल अरबाब साहब कह रहे हैं कि आप रिपीट करें। तो मेरे प्यारे भाई, आप जो है वो दोबारा सेशन को सुने, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, वैलिड है, ऑफ कोर्स वैलिड है कदीर भाई। I think last session, maybe a lot of students were asking different questions regarding IELTS preparation session. So I have done some videos on that topic. You can go through MSKmentors platform, but I'll make a different, even on the same Rashid platform, on the same opportunities corner, I think so. आई विल डू अ सेशन जिसमें मैं आप लोगों के लिए ड्राफ्ट बनाऊंगा कि आप लोगों ने स्पीकिंग कहाँ से करनी है, रीडिंग कहाँ से करनी है, लिसनिंग एंड कौन सा मॉड्यूल रहता है, रीडिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, कहाँ से, कौन से चैनल से. देर इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म विच ऑफर्स फ्री कोर्सेज फॉर दैट, बिकॉज इज़ अ पाकिस्तानी वी आर रियली लुकिंग फॉर फ्री स्टफ. तो आपको मिल जाएंगे. But if I'm just mentioning few, let me just go through the few channel that I will mention. That IELTS list for writing. Let me just go through few it. Mm, Asad Yaqub IELTS. Usually, if he's watching my this live session too, but he's one of the best mentor, especially for reading section. For reading section, you can go through the channel of Asad Yaqub. For writing, you can go through IELTS Liz, because she explained in very in-depth information about how to draft your IELTS part 1 and part 2. For listening, I would recommend, uh, because the most two sections which are very usually difficult is reading and writing. For reading, Asad Yaqub, and for writing, IELTS with Liz. And for speaking, I would recommend one. It's also IELTS Advantage. They have some free courses too. Another is, I'll do a differentiation with the best. There's, I think I forget its name, but I would mention in the chat as well. In maybe in future, I'll do a differentiation on the same topic. So sections, जो IELTS है, it's all about your practice. Try to do your practice test from different modules, और उसी को आप प्रैक्टिस करें, और जो मैंने आपको चैनल बताए हैं, गो थ्रू इट, देखें आप लोग. और जुनेद भाई मेरा हीरो कह रहा है कि माशाल्लाह, लव यू. बहुत शुक्रिया सर, मोहब्बत है आपकी. ठीक है. अच्छा जी, फिर कह रहे हैं कि फ्रॉम वेयर विल प्रिपेयर आइल्स, से तो हो गया. उसके बाद कदीर अहमद कह रहे हैं, बस कदीर भाईजान, मैंने आपको बताया कि आपके पास टेस्ट है, तो आप देखें कि कितने टाइम के लिए वो वैलिड है. और पेरिचीसी ने इस बार किया है स्पेसिफिक केस, आई थिंक एंड ऑफ द जनवरी से पहले जो टेस्ट हुए हो, और अगर वो वैलिड है तो इट्स एक्सेप्टेबल. ठीक है, तो एक्सेप्टेबल है भाईजान. Uh, yeah, SYCP. I think it's Young Christian Scholarship. I think so, if I'm not wrong. Let me just go through it. SYCP. Just go through it, SYCP. But then I'll tell you information about that if it's Young Christian Scholarship. So just wait.
Yeah, yeah, Young Christian Scholarship Program. So till now, Tempest didn't announce it, and if maybe they announce, I don't have the information, but I'll go through it, and if it's possible, I will have a detailed session on that topic as well. So thank you so much. Dr. Muhammad Shoaib Khan, both HEC and Tempest Foundation. Ali Bhai, if you are watching me on YouTube, so you can go through MSK Mentors, Instagram, contact us. Our team will help you in that, because I have to go through your previous academics plus your research work if you have done some, and your publication and stuff. So, yeah. Specifically, last year it was around 15 to 20. तो उसमें कोटा वाइज स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स थे. हमारा भी एक बच्चा बलूचिस्तान से नॉमिनेट हुआ था. तो आप उसे फिर डिवाइड करें, उनका अपना क्राइटेरिया है, और इस बार वो सीट्स डबल हो चुके हैं. तो inshallah a lot of opportunities are there, but again I'm telling you, MBBS in BDS are very competitive. So if you're applying for MBBS in BDS, first you have to having a strong grip on academics जो test होगा उसमें. Secondly, you need to have a very strong motivation later, because it's very important in your final nomination. Because if even if you are nominated from HEC, still वो आपको reject कर देते हैं अगर आपका motivation later strong नहीं हो. And third and most important point is you really need to have a proper mentorship from the one who are already studying or on the one who are having enough information. So these are the three important points. हमारे different students हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हेल्प कर रहे हैं. हमारा MSK Mentors प्लेटफॉर्म है, इनके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प आउट कर रहे हैं. तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट विदाउट done a proper homework, don't go for MBBS. If you have the proper knowledge, then apply for that. And the second important thing, if you have enough grade, let's suppose in along with that you have a strong grip on your previous जो आपकी बुक है, कि उनके इसका जो टेस्ट पैटर्न है लास्ट टाइम मैंने बताया था, तो उसमें आपको जो है वो अच्छे मार्क्स लेने होंगे. बाकी सीट्स हैं, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि इनको बच्चे उधर से उस क्वालिटी की नहीं मिलते, तो इधर जो करंटली बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें एमबीबीएस वाले जो है वो फील्ड स्विच करते हैं, तो उससे शॉर्ट लिस्ट करते हैं, क्योंकि उनको वो राइट कैंडिडेट नहीं मिलते. वो राइट कैंडिडेट क्यों नहीं मिलते? कि उसका मोटिवेशन लेटर सही नहीं होता, उनके जो बाकी पॉइंट जो डिटेल से बताई है वो नहीं. ठीक. भाई साहब ने बहुत बड़ा कमेंट्स लिखा है, और वो कह रहे हैं कि समवन कंप्लीटेड हिज मास्टर टेडी, कैन शी अप्लाई टू अनदर पीएचडी और रिटर्न पॉलिसी इन केस ऑफ फाइनल सिलेक्शन. जी जी बिल्कुल, अगर आपके पास एंड इफ यू हैव डन योर बैचलर एंड यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, कोई मसला नहीं है, आप लोग जा सकते हैं, आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं. और बहुत सारे स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्रीज, they are studying in different countries and they are working on different position, and they are HEC are really assisting you in that, and HEC really pleased to give you that opportunity. So of course, if you are, let's suppose, from master or bachelor, so after that you can go for, after bachelor degree you can go for master, and after master you can go for PhD. But if you have done your PhD, then it's better that you should go to Pakistan and serve the Pakistani universities. हमें आपकी ज़रूरत है फिर भाईजान, फिर आपको पाकिस्तान जाना होगा सर. और हमारा जो एजुकेशन हेड है अताउल हक, वो कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू सर. अताउल हक इज़ द वन जिसकी प्रेजेंस की वजह से आई एम मोर कॉन्फिडेंट हेयर, और मेरी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारी रीजनल ऑफिस पाकिस्तान की, तो ही इज़ द वन हु इज़ हैंडलिंग ऑल दिस, or he's doing really a great job. तो अताउल हक, thumbs up for you sir. Love you sir. FAC प्री मेडिकल इन 2022. भाईजान मैंने पहले भी बताया है कि एक ही चीज़ की वजह से प्रोफाइल नहीं होता, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मैंने सेशन में बताए, तो आप उसको दोबारा सुने, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है. बट विद दैट प्रोफाइल आई हैव टू नो अबाउट योर ग्रेड्स, एंड आई हैव टू नो अबाउट योर all the points what I discussed. तो कोई मसला नहीं है कदीर अहमद भाई, कोई मसला ही नहीं है यार, कोई मसला ही नहीं है.
और मेरा बड़ा भाई जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह ही इज़ वाचिंग माय सेशन एंड ही इज़ मेंशनिंग एंड ही इज़ कमेंटिंग अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम मोहब्बत है आप लोगों की। इफ़ यू आर वाचिंग मी एंड आई एम रियली सॉरी इफ़ आई मिस्ड एनी कमेंट सेक्शन, बट ही इज़ माय मेंटर, माय ब्रदर्स आर माय रोल मॉडल। और ये वो लोग हैं जो मुझे इंस्पायर्ड करते हैं, जिसकी वजह से मैं इंडिपेंडेंटली सर्व कर रहा हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। यूरोप में हूँ, डिफरेंट कम्युनिटी को, इवन यूरोपियन को इस लेवल पे सर्व कर रहा हूँ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ माय फैमिली मेम्बर। तो अ लॉट ऑफ लव सर। अच्छा, इसके बाद गैप ऑफ 2 इयर्स आर ठीक है। ज़ियाद भाई हमारा मिस के मेंटोर्स का ही स्टूडेंट है, तो सर लव यू सर। इसके बाद जो है वो आदिल अरबाब कह रहे हैं कि अपलीटेड बैच डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन HR, आई एम सीकिंग फॉर माई हायर स्टडीज़, व्हाट शुड बी द इनिशियल स्टेप टू स्टार्ट। आदिल भाई इस सेशन को दोबारा देखें, और किसी भी अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखें, और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आपका प्रोफाइल अच्छा है तो MSK मेंटोर्स को इंस्टाग्राम पे सर्च करें, कांटेक्ट करें, क्योंकि ये सेशन डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अब लाइव है। तो आप, आई डोंट नो आप किस प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, तो आपको उधर से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। FAC pre-medical in 2022, previous you see it will be 70 plus accordingly। अवेश भाई आपकी मार्क्स बहुत अच्छे हैं। If it's 94%, so you really need to have a proper motivation letter, really need to have a proper field जो आपका इंटरेस्ट है, और इफ़ यू हैव दैट देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इंशाल्लाह कि आपकी नॉमिनेशन हो जाएगी। अब डिपेंड करेगा कि आपने जो है वो किस मेजर में जाना है, और उसी मेजर के मुताबिक आई वुड रिकमेंड इन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। तो इफ़ यू आर स्टिल वाचिंग मी, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। अच्छा भाई साहब कह रहे हैं कि आई वांट टू अप्लाई फॉर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इल्टे है, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेच है, ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ हैं। हो जाएगा प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन, बस सिर्फ आपने डिफेंड करना होगा, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ बच्चे थे जो कि, और हमारे ही बच्चे थे एमएसके मेंटोर्स के, कीर्तन नाम का है, 1 2 3 और है जिनको गाइड किया था, तो उनकी नॉमिनेशन हो गई थी मेडिकल के बाद भी। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने टेस्ट और मोटिवेशन लेटर मुझसे सही से डिफेंड नहीं किया था, तो नहीं हुआ था। तो उस चीज़ को आप ख़ास ख्याल रखें। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे कमेंट में लिख सकते हैं, इसके मेंटोर से पूछ सकते हैं। देखो, जो लोग इधर MBBS कर रहे हैं नोमान शाह, वो बहुत रेयरली रिस्पॉन्ड करते हैं, और जो इधर मास्टर कर रहे हैं वो भी बहुत रेयरली रिस्पॉन्ड करते हैं। आपको मिल जाएंगे कुछ लोग, बट हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ हैं जो कि करंटली कर रहे हैं MBBS, बट वी आर taking their time once we have the specific students for mentorship। तो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है और अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आई हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। अगर आप लोग ये लाइव सेशन देख रहे हैं तो अभी आप कमेंट में बताएं, आई विल हेल्प यू। तो मैंने जो सेशन बताया ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन थे जो आपको मैंने डिलीवर कर दी, तो इसके बाद आपको किसी दूसरे बंदे से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बता दिया तो बात ख़त्म हो गई। अच्छा, नुमान खान एक बार आपने किया तो ठीक है, बार बार एक ही कमेंट। जी बिल्कुल, मेडिकल फील्ड में जो है वो अ, यही फील्ड जो है वो कॉम्पिटिटिव है। मेडिकल फील्ड में फार्मेसी हो गया, नर्सिंग हो गया, ये फील्ड जो है कोई कॉम्पिटिटिव नहीं है। बस ये है कि आपने सही से अप्लाई करना है, मोटिवेशन लेटर्स को, इन चीज़ों को सही से ड्राफ्ट करना है। एंड दैट्स वाई जो मैं कहता हूँ कि हम कोशिश करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, हम उनको वही उसी यूनिवर्सिटी से मेंटोर असाइन करते हैं, तो फिर उसके साथ काम करते हैं और वो हेल्प करते हैं उसके जो
यही वजह होती है कि उसको आने के बाद भी कोई मसला नहीं होता और पूरे प्रोसेस में उसके साथ रहते हैं। तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे एमएसके मेंटोर्स प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाएगी, तो उधर जाके देखिए। उनके मैं बहुत कम रिस्पॉन्ड करता हूँ, मेरे पर्सनल प्रोफाइल पे मत कीजिएगा, मैं बहुत कम रीड करता हूँ मैसेजेस, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। बस मैं इसी टाइम बात कर सकता हूँ जब मैं लाइव होता हूँ आप लोगों के साथ, और या वो जो हमारे टीम वाले जो स्टूडेंट्स के साथ सेशन अरेंज करते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स वेरी रेयर कि मैं रिस्पॉन्ड करूँ, बट हमारी टीम वाले आपको ऑलमोस्ट अवेलेबल है। और इस लाइव सेशन के कमेंट्स में अगर आप लोग पूछते हो तो आई वुड रिस्पॉन्ड यू, क्योंकि आई हाईली प्रेफर कि उनके इसका आप लोगों का जो कमेंट है उससे हज़ारों और लोग भी देखते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ मैसिव हेल्प, तो इसी वजह से मैं कह सकता हूँ, एंड दैट्स व्हाट आई कैन डू इन माय कैपेसिटी। ठीक है भाईजान, यूट्यूब से कह रहे हैं कि कैन वी चेंज क्राइटेरिया ऑफ एचईसी? नहीं, जो आपने बैचलर किया है उसी बैचलर का ही आप लोगों का टेस्ट होगा, किसी भी क्राइटेरिया को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, ठीक है। तिलावत सुनाए हमें, सुनाऊंगा इंशाल्लाह एक दिन, ठीक है, कोई मसला नहीं है। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं आसिफ शाह, बिल्कुल आप कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू डिफेंड योर सेल्फ इन पॉलिटिकल साइंस की, आई थिंक स्पेशलाइजेशन नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन में है, सोशियोलॉजी में है, तो उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। और मे बी पॉलिटिकल साइंस से रेलेवेंट डिग्री हो तो जो सेशन मैंने किया है वो गो थ्रू करें। ऑफ कोर्स पॉसिबल है सर। तो आपको लिए जो है वो मोटिवेशन लेटर और बाकी चीज़ों पे काम करना होगा। प्रोफाइल 7 है आपका, तो आप कांटेक्ट करें। इफ़ यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब और फेसबुक तो एमएसके मेंटोर्स को सर्च करके प्रोफाइल भेज दें, वो आपको मज़ीद हेल्प करें। एफएसी प्री इंजीनियरिंग 89 बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल बेस्ट प्रोफाइल है कदीर अहमद, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल। मोटिवेशन लेटर और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ एईएफ स्कोर अच्छा हो तो चांसेस है भाई साहब, नॉमिनेट हो जाओगे, ठीक है। कह रहे हैं कि नॉन डिग्री प्रोग्राम लैंग्वेज प्रोग्राम है, लैंग्वेज प्रोग्राम है, आप लोग हमारे उस पे भी देख सकते हो, कुछ स्टूडेंट हैं जो कि लैंग्वेज प्रोग्राम पे हुए हैं, तो लैंग्वेज प्रोग्राम है, ठीक है। तो आप लोग जो है वो लैंग्वेज प्रोग्राम पे मैं जस्ट कुछ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, तो वेट अ मिनट, कोई भी कमेंट है बताएं, वी हैव आई थिंक 4-5 मिनट्स मोर, तो मैं देख के आपको बता देता हूँ, ठीक है। और अभी जो कि हम लाइव हैं तो मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे हमें कितने लोग देख रहे हैं, तो जस्ट गो थ्रू इट बेस्ट, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं हेलो। नहीं नहीं आदिल भाई, आपने इस तरह करना है कि अगर आप जो है वो if you are a bachelor student and if you are applying for master student, of course we can help you in that, बट इफ़ यू आर अ पीएचडी स्टूडेंट तो उस पे मैंने एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी बनाई है, मैं आपको बता भी देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। लेट मी जस्ट गो थ्रू इट, मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ कि मैंने जो वीडियो बनाई है, हाउ टू सर्च सुपरवाइजर फॉर पीएचडी शोएब स्पीक्स। अच्छा, मैं अगर स्क्रीन शेयर करूँ, देखो मैंने ये वीडियो बनाई है, इस पे सारा डिटेल जो है वो बताया है, और इस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। जस्ट सर्च करिए हाउ टू सर्च सुपरवाइज़र फॉर पीएचडी, साथ में चैनल का नाम लिखिए, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी, इस पे सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बताएं कैसे सर्च करना है, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मेजर भी चेंज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो ज़ीनिया जो फ़ील्ड चेंज है, इट्स पॉसिबल, इट्स हाई एक्सेप्टेबल इन यूरोप,
इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपको जो है इसको प्रूव करना है इन योर मोटिवेशन लेटर, आपको प्रूव करना है विद योर प्रीवियस कोर्सेज, आपको प्रूव करना है विद योर इंटेंशन, और जो आपके एक्स्ट्रा कुरिकुलम एक्टिविटीज़ है वो, जो आपकी रिसर्च एरिया है वो. तो these all are the important points that is link that you can switch your major. तो that's the reason कि जो ये सेशन है it's really important. ठीक है. Xenia, it's a fully funded scholarship, तो no need of any kind of bank statement. ठीक है. बलूचिस्तान के सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट सेशन में बताया था, आई वुड कीप इट कॉन्फिडेंशियल बिकॉज उनकी क्राइटेरिया है, आपको कुछ पोस्ट्स पे, मेरी पोस्ट पे भी उन डिस्ट्रीब्यूशंस के मिल जाएंगे, लेकिन उस रिगार्डिंग नहीं होता, HEC का अपना एक क्राइटेरिया है. और मैं अक्सर कहता हूँ नो नीड टू वरी अबाउट द सीट डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट अप्लाई, follow the procedure what I mentioned and do that. बस सिंपल करे भाईजान. ठीक है. गुड जॉब सलमान अब्बास साहब, लव यू सर. सलमान अब्बासी जो है वो स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलर है, अभी इटली में पढ़ रहे हैं और ही इज़ आल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब. तो लव यू सर, लव हो गया सर. अली भाई, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं बिकॉज आई एम ऑनलाइन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब. तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आई एम रिसीविंग अ बंच ऑफ कमेंट्स. तो दैट्स वाई मे बी भी हुआ हो तो यू शुड राइट इट अगेन. ठीक है, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगा भाई साहब जब तक आपको कमेंट मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया हो. ठीक है, सही है. बिल्कुल बिल्कुल. देखो, मोटिवेशन लेटर अगर आपको चाहिए तो इस सेशन में ऑलमोस्ट सारी बातें बताई हैं, बट इफ़ यू स्टिल नीड असिस्टेंस फ्रॉम द मेंटोर्स, तो उसमें सारे मेंटोर्स हैं जो कि इधर पढ़ रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हैं, MBBS के जो पढ़ रहे हैं वो भी है, और दे वुड हेल्प यू, जो कि इस सेशंस में भी ऑलमोस्ट आपको हेल्प मिल चुकी है. बट इफ़ यू नीड वन टू वन मेंटोरशिप और प्रॉपर, तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं. इस सेशन का रेफरेंस आप लोग दे सकते हैं. ठीक है. और अक्सर बच्चे फिर ये कहते हैं कि देर आर सम सर्विसेज विच आर नॉट फ्री. तो ऑफ कोर्स जिसमें आपको जो है वो स्पेसिफिकली और वन टू वन टाइम चाहिए होता है, और जिसमें मेंटोर्स आपके साथ होते हैं, आपके पूरे प्रोसेस में होते हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर से लेकर मोटिवेशन लेटर, टेस्ट प्रिपरेशन के बाद इधर आना, इधर आने के बाद आपके साथ होते हैं, आपके सेटलमेंट में होते हैं, एंड यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली. तो उसके कुछ ना कुछ चार्जेस है जो कि बिल्कुल इतने नहीं होंगे, बट जस्ट फॉर डेडिकेशन इन फॉर देयर मेंटोरशिप और इन फॉर देयर मोटिवेशन हमने कुछ रखे हैं, तो ऑफ कोर्स वो होते हैं. ठीक है. इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग बताएं, और अगर आप लोग कुछ भी बात करना चाहते हैं मुझसे तो आप करें. बाकी थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह नेक्स्ट के सेशन में आपको कुछ ना कुछ सुनाएंगे भी, और वो जो है वो ऑफ कोर्स. Thank you so much. If you're watching me from Africa, I'm glad to have you. And of course, just mention your specific country. If you are from, let's suppose, any specific African countries, then I would recommend you that either you are eligible to apply for that, because there's a lot of African countries and they're having, I think, more than 150 and 200 per country seats. So there is opportunity. So if you are watching me, just write your country name and I will be happy to connect you with the mentors who can help you. ठीक है. Just write the comment section. जल्दी 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 आप लोग comment section करें. So I would help you. I would write the comment section. और आई हैव डन BBA फ्रॉम सकर बिलो 3 GPA. आई थिंक मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो जवाब आंसर कर दिया है, बट इफ़ यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब एंड राइट द कमेंट सेक्शन, तो BBA from Sucker, IBA with below 3 CGPA. Dekho, if you have done the BBA from Sucker and it's below the 3 CGPA, so now it's a game of motivation later and a few online courses that you have to mention in applying while applying on HEC portal.
और फ्यू अदर चीज़ों पे आपने काम करना है। तो अगर आप उस पे काम करते हो तो आपके चांसेस हैं। और लास्ट ईयर तो इस तरह हुआ था कि लास्ट ईयर एचईसी वालों ने जो मार्क्स है उनको इतना कंसिडर नहीं किया था। तो टोटली जो डिपेंड था वो आपके यूएसएटी मार्क्स पे था या हेट के मार्क्स पे था और मोटिवेशन लेटर पे था। तो डजेंट मैटर इफ़ यू आर हैविंग जीपीए लेस देन दैट, so just go through the videos what I have done. It's already uploaded on all the platforms. Opportunity Corners पे लास्ट वाला सेशन पड़ा हुआ है, और जिस चैनल पे आप कमेंट कर रहे हैं उस पे भी आपको वीडियोस मिल जाएगी, एमएसके मेंटोर्स पे आपको मिल जाएगी, और स्पेसिफिकली इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगी। और मज़ीद अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है और कंसाइज है तो आप लोग info@mskmentors.com पे भी अपना प्रोफाइल इवेलुएशन के लिए भेज सकते हैं, डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो हमारी टीम वाले आपको गाइड करेंगे। ठीक है। Cameroon, precisely, bro. I think I didn't heard about Cameroon, but you just check the Stipendium Hungaricum scholarship and your country name, and if there is such kind of opportunity, then I would let you know, because I have a lot of community here, and usually I'm delivering training, so I go through different universities. So then, if I find anyone who is from that country, let me just check it for you, by कैमरून थोड़ा मुश्किल है भाई साहब नाम इसका। CAMERON। I would recommend just go through the Stipendium Hungaricum scholarship and then check it. And then when you are applying on that, just write, let me just show you. फिर कहेंगे कि पाकिस्तानी हेल्प नहीं करते सही से, तो लेट मी शो यू प्रॉपरली। अप्लाई ऑनलाइन। You have to go through that apply.stipendiumhungaricum.hu, and then you have to check your country here. Let's suppose you just have to check here, what's your name. If this is your country name, so of course you can do that, and then you will find all the informations. Okay, and then you just sign, register yourself, and then you will have information that either stipendium are having any specific for your country or not. ठीक है, सही। अच्छा जी, आई एम स्टडिंग इन मास्टर इन फिजिक्स इन लास्ट ईयर हेयर इन पाकिस्तान। यस, यू कैन अप्लाई। अगर आप लोग की जो डिग्री है बिफोर 1 कंप्लीट हो रही है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग अप्लाई। लव यू सर। इमाद भाई कैसे हो आप? जी बिल्कुल, बस नहीं होगा फिर स्कॉलरशिप, क्योंकि आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली फॉर कैमरून, बट there is one email address. You can just write your email and ask about your country. So every year they are aiding different countries. This year they didn't give to few African countries, but almost they are trying to aid different countries. So mohabbat hai. Thank you so much. सोएब भाई बहुत शुक्रिया यार, आप लोग की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। यही एक रीज़न है कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। बहुत सारे और भी कमेंट्स आ रहे हैं। आई एम रियली सॉरी अगर मैं आपके कमेंट्स को इग्नोर करूं या मुझसे नहीं पढ़े जाएं, तो because different platforms are having different questions. But again, if I'm summarizing the whole conversation today, it's about the Stipendium Hungaricum Scholarship 2024 in 5. And if you have any question,
just do let me know here in the comment section. And even you can contact our team, MSK Mentors, they would help you. And I'm from Ethiopia. How can apply in bachelor economics? Bro, I would recommend you can first of all you have to check on specific. I mean, Tempest Foundation apply procedure is simple for all the countries. So if you are from Ethiopia, you have to apply first on your Tempest portal, and then you have to go through and check about your Ethiopian sending partner. I think it's your Higher Education Commission. So then you have to check what's the procedure of that. So I would recommend, if you didn't find anything, there is one group, Stipendium Hungaricum Scholarship. You just write your comment, and if you didn't find anyone, then I will try to connect you with some Ethiopian. But there is a lot of Ethiopian students, and they are studying in different universities, and it's not that hard, so you can easily get that scholarship. So just check on the portal, apply there. Still a lot of people are commenting. Love you, sir. भाईजान, आप इस तरह करें कि पूरा सेशन दोबारा देखें तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? सेम क्वेश्चंस मुश्किल होता है जवाब करना दोबारा. Noman Shah Bhaijan, thank you so much. Thank you so much. So I think I would end that conversation, or I will wait for 2 more minutes or 3 more minutes. तो आप लोग जो भी क्वेश्चन है आप लोग बताएं, और जो भी है आप लोग बताएं. अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू आवर टीम. इंशाल्लाह विल ट्राई टू हेल्प यू. और if you have any question regarding that, so do let me know in the comment section. If not, then we will end the conversation. At the end of the session, I'm really grateful to Opportunities Corner for this collaboration, and I'm really grateful for different students who watched that session. And I'm really grateful for my team who is assisting me in this entire process, and I'm capable to help as much as I can in my capacity. Hope so we will have another session in coming time, and that would be regarding maybe after nomination, maybe before nomination, we will do some kind of activities. So take care of yourself. A lot of love and respect from my side. Allah Hafiz. Bye. Pakistan Zindabad. और क्या बताऊं, if you're watching me from other country, write in your comment section. Take care. Bye. Good night.